Dear students, today we are going to study a very important topic, bank reconciliation statement. Okay, so these are the learning outcomes of this chapter. Learning outcomes is learn the design of a bank passbook. We will learn uh, the design. We will look after the bank passbook. Then the second outcome is understand the reasons of difference between cash book balance and passbook balance and try to ascertain the amount of such differences. Okay, so in this chapter, key words. Okay, so the first keyword is passbook. Okay, in place of passbook, statement of bank या फिर और बैंक स्टेटमेंट या फिर बैंक लेजर. The second one will be cash book or bank balance as per trial balance. And the third one is difference between the above two. Okay. Learn how to resolve such differences. Whatever differences has been ascertained, we will try to resolve those differences. And the fourth outcome of this chapter is understand the purpose for preparing the bank reconciliation statement and its utility. Okay, so these are the four outcomes of BRS chapter. Let's go first by the theories that has been given in the books. Then we will try to understand
by taking some of the examples. Unit overview. Silent features of bank reconciliation statement. The reconciliation will bring out any errors that might have been committed either in the cash book or in the पासबुक। सर जी, पासबुक में एरर्स होता है क्या? हाँ जी, पासबुक में भी एरर्स होता है, बैंक से भी गलतियां होती है। Basically, this point is trying to say that when we try to prepare bank reconciliation statement, in that process, in the process of preparation of BRS, if there is any error in cash book or passbook, there are high chances that those errors will be omitted or at least will be identified. Okay. Then second feature of BRS, any undue delay in clearance of check will be shown up by the reconciliation. When we try to prepare BRS, any undue delay. What is this undue delay? This is delay, delay beyond reasonable delay. No, no. Like bank takes 2 days to clear check. Okay, so we can take 4 days, 5 days. These are like a reasonable period. If it is taking 20 days, 30 days, 40 days, so these are the undue delay. Yeah. It is taking substantial of the delay which is beyond the reasonable delay. Okay, so that is also getting identified while preparing BRS. A regular reconciliation discourages the accountant of bank from embezzlement. A regular reconciliation discourages the accountant of the bank from embezzlement. पता नहीं क्या है इसका मतलब, जो भी है ये किसी तरह का इरेगुलरिटीज की ही बात कर रहा है। कुछ डिले है, कुछ causes of differences in the balances of passbook and cash book. So there is only one genuine reason, that is timing differences, and this one is errors. Okay, errors in recording the entries or differences. What is errors? पोस्टिंग कैश बुक में करना था, कर दिया एक्सपेंस में, दिस इज एरर। पोस्टिंग 400 से करना था, कर दिया 600 से, दिस इज ऑल्सो एरर, बट दिस इज डिफरेंसेस अराइजिंग ड्यू टू एरर्स इन रिकॉर्डिंग द एंट्रीज। ओके, दो तरह के एरर्स हो सकते हैं, लेजर्स गलत और दूसरा एक्स अमाउंट के जगह पे वाई अमाउंट के एंट्रीज हमने डाल दी। Okay, introduction. Banks are essential institutions in a modern society. With the increase in volume of trade, commerce, and businesses, entities face difficulty in transacting in cash for each business activity. They discovered that dealing through bank on regular basis would be the better and safer option. And finally, large business entities switched over to banking transaction instead of dealing in cash. Nowadays, most of the transactions, ये बोलना चाह रहा है कि बैंक्स का क्या रोल है और why we are preferring bank over cash. A bank accepts from people in general deposits in various forms and lends funds to those who need. It also invests some funds in profitable investment, thus money which would have been otherwise idle
is put to use and is made available to those who need it. Those who deposit the money are also to withdraw it according to the, ये सारा बेसिकली उसकी बातें कर रहा है, बैंक क्या करता है, पैसा लेता है, इसको रीड आउट कर सकते हैं. From receiving deposits from and handling cash transaction on behalf of its customer, the bank also renders some other useful services. मतलब कैश लेन देन के अलावा भी बैंक बहुत सारी सर्विसेज, यूजफुल सर्विसेज, and some of them are indicated below. The bank discounts promissory notes or hundies. That is, it enables a customer to receive the cash before the due date in consideration of a small charge called discount. Okay. आपके पास एक promissory note है, ठीक है. इस promissory note के हिसाब से आपको 31/12/2025 का ड्यू डेट में 1 लाख रुपया मिलने वाला है. बैंक 7/12/2025 को आपको बोलता है कि आप मेरे से 98,000 ले लो, मतलब 2,000 का डिस्काउंट दे देते हैं हम आपको. मतलब आप हमें डिस्काउंट दे दो, और इस प्रोसेस को भी डिस्काउंटिंग ही करते हैं. बेसिकली ये इनकम हो गया बैंक के लिए, इनके लिए काइंड ऑफ फाइनेंस चार्ज हो गया, ठीक है. दो, और इनको, इनके लिए क्या हो गया, बैंक का तो काम ही यही करना है. वो क्या करेगा, इस डेट पे 1 लाख रुपया ले लेगा, और आज के डेट में वो 98 दे दिया है, तो 2,000 रुपया उनका नेट इनकम हो जाएगा. तो इस तरह की सर्विसेज बैंक्स देती है, ठीक है. द बैंक अलाउज ओवरड्राफ्ट टू इट्स गुड्स customers so that they can make payment even when they do not have sufficient balance in bank. Of course, the overdraft facility is generally secured and must be cleared later. ठीक है. दूसरी फैसिलिटीज क्या है, ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट ये है, बैंक अकाउंट में 10,000 पड़ा हुआ है, ओके. 31/11/2025 को अचानक आ गया बिल पेमेंट बी लिमिटेड का 20,000, ओके. तो ओवरड्राफ्ट में क्या करता है, इन ओवरड्राफ्ट पे फुल 20,000 and deposit later on 10,000, मतलब 10,000 आप बैंक में दे दीजिए, ठीक है. एंड ऑल्सो पे इंटरेस्ट ऑन 10,000, ठीक है. आप 10,000 पे इंटरेस्ट भी दे दीजिए. क्यों इंटरेस्ट दे दीजिए, क्योंकि बैंक ने आपको फैसिलिटेट करा है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं था, फिर भी आपके 20,000 के पेमेंट को बैंक ने फैसिलिटेट करा है. सो बैंक बेसिकली, बैंक हैज गिवन यू 10,000 of rupees on kind of loan. So on that loan, bank will charge their interest. Okay.
और दुनिया में कोई किसी को फ्री में कुछ नहीं देता। उसके साथ अगर आप देखेंगे, इफ यू नोटिसेस, ओके, so of course the overdraft facility generally secured and must be cleared। तो ये वाला जो सेंटेंस बोल रहा है ना, मस्ट बी क्लियर्ड लेटर, मतलब उसका जो कहने जा रहा है, हमने जो एग्जांपल लिया ना, उसमें वो कह रहा है कि 20,000 तो पेमेंट हमने कर दिया, 10,000 आपके अकाउंट में था और 10,000 लोन ले लिया, तो ये जो 10,000 है ना, ये पे कर दो बैंक को। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है ना, ओवरड्राफ्ट की एक लिमिट होती है। ओवरड्राफ्ट, सपोज करिए इस किसी की लिमिट है 5 लाख, तो जैसे ही ये वाला ट्रांजेक्शन हुआ ना, आपकी लिमिट हो गई 4,90,000। और अगर आप अभी चाहोगे कि 4,95,000 का मैं पेमेंट कर दूं, 4,95,000 की पेमेंट, ये बाउंस हो जाएगा, बोलेगा नहीं, आप यू डू नॉट हैव सफिशियंट बैलेंस और सफिशियंट लिमिट। इस केस में बैलेंस तो नहीं बोलेगा, लिमिट बोलेगा। ठीक है। और ये लिमिट कितना मिलेगा, ये डिपेंड करता है आपकी क्रेडिबिलिटी पे, आपकी सिक्योरिटी पे। जनरली इस तरह के फीचर्स सिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड मतलब आप एक एसेट मॉर्टगेज रखते हो। ठीक है। और जितना का एसेट मॉर्टगेज रखते हो, उतनी की आपको लिमिट दे देते हैं हम लोग। ठीक है। तो आपने अगर 5 लाख का एसेट लेना है, 5 लाख की लिमिट लेनी है, तो आप 5 लाख का एसेट रख दो, वो आपको 5 लाख की लिमिट दे देंगे। ठीक है। ये दूसरा फंक्शन हो गया। पहला डिस्काउंट करता है, दूसरा ओडी फैसिलिटीज देता है, तीसरा बैंक ग्रांट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन। क्या करता है, वो लोन भी देता है। एग्जांपल, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड और अ ईयर और सो टू टू इट्स कस्टमर फॉर स्मूथ फंक्शनिंग of their operations in case of lack of self-funding available with customers। Such financial assistance is of great help for the business। किसी के पास खुद के पैसे नहीं है ना बिजनेस करने के लिए, आप जब थोड़ा सा हायर स्टडीज करोगे तब आप जानोगे कि लोग खुद के पैसे होने के बाद भी लोन लेते हैं। ठीक है। लेकिन हम इस केस में जो इस लाइन बोलना चाह रहा है कि खुद की सफिशिएंट फंडिंग नहीं है, तो लोग लोन लेते हैं। और वो लोन जो होता है किसी भी बिजनेस आइडियाज को एग्जीक्यूट करने में
to execute any business idea, it is a great help for the business. The bank, on behalf of customer, collects the amounts of dividend warrants or interest on securities. Okay, you give instruction to the bank that I have this much of an investment in shares and securities. What bank will do? Bank will collect dividend on them, those equities, and interest on those securities. It will act like an agent on your behalf. Okay. Then the fifth point is on instruction of the customer, the bank makes payment of insurance premium, rent, etc. आप क्या करते हैं? पेमेंट इंस्ट्रक्शन दे के रखते हैं कि जैसे ही महीना होगा, ठीक है, आप हमारा इंश्योरेंस का प्रीमियम दे देना, आप हमारा रेंट पे कर देना, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल भर देना, आप हमारा वाटर बिल भर देना, आप हमारे स्कूल की फीस भर देना, आप हमारे पिताजी को 5,000 रुपया या 10,000 रुपया हर महीने 1 तारीख को खुद ब खुद भेज देना। इस तरह की स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आप बैंक को दे सकते हैं। बैंक विल फॉलो it and bank will try to perform those duties. Okay, the bank sells and purchase share debentures or government securities on behalf of its customer. डीमैट अकाउंट के थ्रू, ओके, डीमैट अकाउंट के थ्रू क्या होते हैं? आप शेयर्स खरीद सकते हो, आप शेयर बेच सकते हो। ये सारे फीचर्स बैंक प्रोवाइड आजकल कर रहे हैं। मनी कैन बी रिमिटेड टू अनदर प्लेस ऑफ पर्सन थ्रू अ बैंक एट लो कॉस्ट। क्या है? एनईएफटी, आरटीजीएस, ठीक है, आरटी, इंस्टेंट, आईएमएस, आईएमटी, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, इस तरह के फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू anyone can send money. The bank, in return for consideration, furnishes security or guarantee for its customer whose credit is good. ठीक है, आपके बिहाफ पे बैंक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये सिक्योरिटी बैंक गारंटी के रूप में भी हो सकती है कि आप when A and B are doing businesses, B is under the exposure of risk. So, so to cover that risk, we have decided to ask for a 5%, 10%, 20% of the business transaction that are going to happen. They ask for the securities kind of assurance that if anything wrongs, if anything goes wrongs, if anything goes wrong, that they can recover that money from the client. Okay. So if in that case, if anything goes wrong, then the other party, the other counterparty, on the basis of that guarantee, will ask from the bank, and then the bank will encash those amounts. Okay. Obviously, after encashing, the bank will also charge those amount from the issuer of the security. The bank also issues letter of credit or traveler's check to facilitate commerce. लेटर ऑफ क्रेडिट भी बैंक इशू करता है जिसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर पाते हो। बेसिकली ये भी काइंड ऑफ बैंक बोल रहा है ठीक है, द कस्टमर इज गुड, आई एम पेइंग यू मनी ऑन दिस बिहाफ, और दिस इज द लेटर ऑफ क्रेडिट आई एम गिविंग यू, you can encash that if the customer will not pay you the money or the party will not give you the money. The bank also provides international banking services such as currency exchange, remittance from abroad, cross-country payment, foreign letters of credit, export and import. All these are the facilities that are being provided by banks like international banking. You can send money to the foreign, such as currency exchange, remittance from abroad, cross-country payments. एक देश से उस देश में पैसा भेजना, इस देश से इस देश में पैसा, इस तरह की सारी फीचर्स बैंक करती। As the past, many corporate frauds have incurred by companies through manipulating entries either in bank statement or in cash book. Example, a company's financial statement may present incorrect bank balance. ठीक है, ये क्या बोलना चाह रहा है? आपने ये बनाया बैलेंस शीट,
है। यहाँ एक आता है कॉलम कैश एंड कैश इक्विवेलेंस आपने दिखा दिया 1000 करोड़। ठीक है, 1000 करोड़ का मतलब ये तो बहुत बढ़िया कंपनी, बहुत कैश रिच कंपनी, पैसे की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? पासबुक में जब देखा ना तो 400 करोड़ पड़ा हुआ था। ठीक है, पासबुक में 400 करोड़ पड़ा हुआ था, गैप आ गया ना। तो यहाँ पे जो गैप आता है इसी को काउंटर करने के लिए हम बीआरएस बनाते हैं। ओवर द पीरियड रिकंसाइलिंग द अकाउंट्स बिकम एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज। ठीक है, बीआरएस क्यों जरूरी हो गया? कि जो 1000 करोड़ और ये 400 करोड़ का डिफरेंस है, इज दैट डिफरेंस अ जेन्युइन डिफरेंस? लाइक टाइमिंग गैप की वजह से हो गया, ये कुछ एंट्रीज आपने यहाँ पे कंसीडर कर ली है और यहाँ पे अभी कंसीडर नहीं हुई है। द मोमेंट दोज एंट्रीज विल बी कंसिडर्ड हियर, it will also become 1000 crore. Then there is no difference. If that difference is not going to be uh, justifiable or eliminated with the time, then there is a big problem.